बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लज़ीना इह्तदौ ज़ादहुम हुदा व आताहुम तक़वाहुम। Dear second year students, today we are going to start our next lecture on the topic of renal failure and dialysis। सेकेंड ईयर के अजीज़ तलबा, आज हम अपने नए लेक्चर का आगाज़ करते हैं जिसमें हम रीनल फेलियर डायलिसिस पर बात करेंगे। So the key points of our today's lecture are, first of all, we will discuss the renal failure. What is renal failure? What are its causes and what are its complications? And secondly, we will discuss the dialysis and then hemodialysis and peritoneal dialysis। अजीज़ तलबा, आज के लेक्चर में हम समझेंगे रीनल फेलियर यानी किडनी फेलियर से क्या मुराद है, इसकी क्या वजूहात हैं और इससे क्या बॉडी के अंदर दूसरे मराइज़ जो है वो जन्म लेते हैं या अमराज जन्म लेते हैं। फिर इसके बाद हम बात करेंगे डायलिसिस क्या है और इसकी दो टाइप्स, हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस से क्या मुराद है और इसका मैकेनिज़्म ऑफ वर्किंग क्या है। तो अपने पहले कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं। रीनल फेलियर, the inability of the kidney to filter urine is called renal failure. When the kidneys are unable to filter urine, it means the kidney failure or the renal failure. End stage renal disease or high degree of renal failure is also called uremia। अजीज़ तलबा, अगर देखा जाए रीनल फेलियर से मुराद कि जब गुर्दे खून से यानी ब्लड से यूरिया को फिल्टर करने के काबिल ना रहें तो इसको हम कहते हैं ये किडनी फेलियर या रीनल फेलियर कहलाती है। और इसी तरह से गुर्दों का ऐसा मर्ज़ जो इंतहाई हद तक पहुंच जाए इसे यूरीमिया कहा जाता है। थर्डली, what are the causes that are responsible for the renal failure? Various pathological and chemical factor causes the renal failure। अजीज़ तलबा, अगर देखा जाए तो बहुत सारे पैथोलॉजिकल और केमिकल फैक्टर वजूहात बनते हैं किडनी फेलियर की यानी renal फेलियर की। और इसी तरह से अगर देखा जाए तो अगर किडनी ब्लड से यूरिया को फिल्टर नहीं कर पा रहे तो ब्लड में यूरिया का लेवल बढ़ता जाएगा। The rise in the blood urea level causes the high blood pressure and anemia। तो खून में यूरिया का लेवल बढ़ने की वजह से हाई ब्लड प्रेशर का मर्ज़ और एनीमिया यानी खून की कमी का मसला जो है वो पैदा हो जाता है। तो ये किडनी फेलियर यानी रीनल फेलियर की कॉम्प्लिकेशंस कंडीशंस हैं। नेक्स्ट इज़ द डायलिसिस। Dialysis means the separation of urea from the blood, and it is performed by two methods. One is the hemodialysis. Hemodialysis means cleaning of blood, and blood is actually passed through or circulated through a dialyzer, and dialyzer is actually a artificial kidney machine that works on the same mechanism as that nephron work in our kidneys। अजीज़ तलबा, देखा जाए तो डायलिसिस से मुराद खून से यूरिया को अलहदा करना, पाक साफ़ करना डायलिसिस कहलाता है। इसके दो मेथड और तरीक़ाकार इस्तेमाल किए जाते हैं। एक जिसमें हेमोडायलिसिस है। हेमोडायलिसिस में डायलाइज़र मशीन के ज़रिए से पेशेंट का ब्लड गुजारा जाता है और इस डायलाइज़र मशीन को आर्टिफिशियल किडनी भी कहा जाता है। इस डायलाइज़र मशीन में मेम्ब्रेन से बने हुए ट्यूब्यूल्स होते हैं जो ब्लड और डायलाइजिंग फ्लूइड को सेपरेट करते हैं, अलहदा करते हैं। Dialyzer has the membranous tubules by which the blood of the patient passes, and through the process of diffusion, urea or the waste material moves out from this membrane to the dialyzing fluid. So it works on the exact mechanism as our nephrons done in our kidneys. So it is called hemodialysis।
The next type of the dialysis is the peritoneal dialysis. In peritoneal dialysis, we can see our body has the abdomen or abdominal cavity has the peritoneal cavity. अजीज तलबा अगर देखा जाए तो पेरिटोनियल डायलिसिस में हम अपनी बॉडी के अंदर डायलाइजिंग फ्लूइड को एंटर करते हैं, ख़ास तौर पर एब्डोमेन में मौजूद पेरिटोनियल कैविटी में, जहाँ पर पेरिटोनियल मेम्ब्रेन्स और पेरिटोनियल कैपिलरीज मौजूद होती हैं, एक पाइप के ज़रिए से, जिसको हम कैथीटर का नाम देते हैं। इन द पेरिटोनियल डायलिसिस, dialyzing fluid is filled in it by the tube called catheter, and when the blood passes through these capillaries, the excess waste or the nitrogenous waste or the urea and water diffuses out in the dialyzing fluid inside the peritoneal cavity. And when the process when a large amount of the waste moves out from the peritoneal capillaries to the dialyzing fluid is removed, and the process is repeated for several times in a day. अजीज तलबा अगर देखा जाए तो पेरिटोनियल डायलिसिस में हम पेट में पेरिटोनियल कैविटी में डायलाइजिंग फ्लूइड को भर के, जिसके लिए कैथीटर एक पाइप इस्तेमाल किया जाता है या एक ट्यूब इस्तेमाल की जाती है, और इस ट्यूब के ज़रिए से एब्डोमिनल कैविटी यानी पेरिटोनियल कैविटी में डायलाइजिंग फ्लूइड भर दिया जाता है, जो उन पेरिटोनियल कैपिलरीज से गुजरते हुए ब्लड में से यूरिया और वेस्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है। In the next slide we can see the diagrammatic representation of the process of hemodialysis. In this diagram you can see blood is entering from the top side from artery of the patient, and this blood is circulated through the membranous tubules and then return into the vein, and these membranous tubules have the dialyzing fluid outside. When the blood passes from these membranous tubules, the waste material diffuses outside these membranes. So in this diagram you can see the waste is diffusing out from the membranes of the dialyzer. So dialyzer is actually working on the exact mechanism as that our nephron done in the kidneys. So that is why it is called artificial kidney machine. अजीज तलबा अगर देखा जाए तो हीमोडायलिसिस में मेम्ब्रेन से बनी हुई ट्यूब्यूल्स नालियों में से पेशेंट का ब्लड गुजरता है, जिसके इर्द गिर्द डायलाइजिंग फ्लूइड एक चैम्बर में भर दिया जाता है, और जब ब्लड पेशेंट का गुजरता है इन मेम्ब्रेन से, तो डिफ्यूजन के ज़रिए से वेस्ट इर्द गिर्द मौजूद डायलाइजिंग फ्लूइड में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये प्रोसेस कई बार रिपीट करना पड़ता है। तो इस तरह से पेशेंट का ब्लड काफ़ी हद तक यूरिया और वेस्ट से क्लियर हो जाता है। और साथ साथ याद रहे, डायलिसिस इज़ द टेम्परेरी ट्रीटमेंट फॉर किडनी फेलियर। द permanent treatment for kidney failure is the kidney transplant. And in this slide you can see the peritoneal dialysis or the mechanism of peritoneal dialysis. Our abdomen has a cavity that is called peritoneal cavity, and this peritoneal cavity has peritoneal capillaries, and in this peritoneal cavity we insert a tube that is called catheter, and dialyzing fluid is filled inside the peritoneal cavity, and by this filling of the dialyzing fluid, when the blood passes through these peritoneal capillaries, waste moves out or diffuses out in the dialyzing fluid inside the cavity. अजीज़ तलबा अगर देखा जाए तो पेरिटोनियल डायलिसिस में हम बॉडी में एब्डोमेन में मौजूद पेरिटोनियल कैविटी में डायलाइजिंग फ्लूइड को कैथीटर की मदद से भर देते हैं, और जब इन कैपिलरीज से डायलाइजिंग फ्लूइड गुजरता है, अपना ब्लड गुजरता है, तो वो वेस्ट जो कि ब्लड में मौजूद होंगे, यूरिया और वाटर, वो डिफ्यूज़ होकर डायलाइजिंग फ्लूइड में आ जाता है।
क्योंकि डायलाइजिंग फ्लूइड की ये प्रॉपर्टी है कि ये वेस्ट को या हम देखते हैं सोल्यूट्स को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी रखता है। ऐसा ही मैकेनिज़्म काम करता है डायलाइजिंग फ्लूइड का डायलाइज़र यानी हेमोडायलिसिस में, और यही मैकेनिज़्म इस डायलाइजिंग फ्लूइड की मदद से इस पेरिटोनियल कैविटी में परफॉर्म करवाया जाता है। ये भी किडनी फेलियर का एक टेम्परेरी ट्रीटमेंट है। परमानेंट सॉल्यूशन, परमानेंट ट्रीटमेंट और परमानेंट क्योर ऑफ द kidney failure or renal failure is the kidney transplant. So it is the end of our today's lecture. Thank you, good luck and stay blessed.